सर आपका माइक म्यूट है। जी जी। Okay, so can you hear me now? यस। Okay, okay, great. I'm sorry for the disruption in the internet connection. So Graves' disease, diffuse toxic goiter. Then comes Plummer's disease, which is toxic multinodular goiter. The toxic phase of subacute thyroiditis, toxic adenoma, and there are some other reasons like pituitary tumors, excess TSH, then molar pregnancy or choriocarcinoma, metastatic thyroid cancers, struma ovari, and thyrotoxicosis factitia. With this, we are going to go to the first case history number 1. Now be active on the chat box because I need you to be active in the chat box, right? So when I ask the question, just post it in the chat box. So this is a 32-year-old medical doctor. Now consider yourself all in the clinic, right? This is a 32-year-old medical doctor presented with 1 year history of weight loss, 7 kilogram weight loss, palpitations, heat intolerance, and tremors. Scanty but regular menses. Height 160 centimeters, weight 47 kg. BMI is 18.3. Blood pressure is 120/70. Pulse is 100. Bilateral proptosis with lid lag. Thyroid grade 2 diffuse goiter, Bruy 1 plus. Tremors of both hands, moist and warm palms. FT4 is high 3.3. TSH is low 0.02. Thyroid antibodies is positive. Now, what is the diagnosis? The first question is, what is the diagnosis? Now look, you already know this is Graves' disease. No, you already know this is hyperthyroidism because FT4 is high, TSH is low. But then there are many causes of hyperthyroidism. Now, what do you think this is? Is this Graves' disease? Is this toxic single nodule? Is this multinodular toxic goiter? What do you think is this? Okay, somebody writes Graves' disease. Graves' disease. Graves' disease, fantastic. Because you see, there are certain clues in this. Okay, that's okay. So you see, there are certain tricks in this. This is bilateral proptosis, again, a feature of Graves' disease. Then you have got antibodies that are positive. Then you see this is a diffuse tumor, and Bruy is also there because when Bruy is there, this is likely Graves' disease. So again, what is the diagnosis? Graves' disease. What should be the treatment plan? So the treatment plan in Graves' disease is either anti-thyroid medications or radioactive iodine, right? These are the true headers that we discuss. Anti-thyroid medications like carbimazole and radioactive iodine. Patient describes in favor of anti-thyroid drug therapy. Now, these are some questions that I would go through and tell you the answers as well. Which drug should be used to treat this patient? Propyl thiouracil or carbimazole? So remember, dear students, carbimazole is the treatment that you use. Propyl thiouracil you will only use in the first 3 months of pregnancy. That's it. In the first 3 months of pregnancy, you use propyl thiouracil. Otherwise, you always use carbimazole. This is a very important thing that you need to know. For how long should be treated to optimize chances of remission? Well, 18 months. In 18 months, that is 1.5 years, 50% of the patients will go into remission. 50% may not go into the remission. So 1.5 years is the time when most patients, or 50% of patients, will go into remission. Does the drug influence chances of remission? Yes, it can, because when you're giving medication, the chances of going into remission is better than when you're not going to give medication. Would the co-administration of T4 during thyroid therapy enhances the chances of remission? तो यूके में पहले क्या करते थे, किसी जमाने में यूरोप के अंदर और शायद आज भी कहीं कहीं, वो पूरा ग्लैंड ब्लॉक कर देते थे, कार्बिमेजोल देके पूरी प्रोडक्शन ब्लॉक कर देते थे, फुल डोज देके 40 to 60 मिलीग्राम पर डे कार्बिमेजोल देके ब्लॉक करते थे और फिर थायराइड हार्मोन रिप्लेस कर देते थे. इसको कहते थे ब्लॉक एंड रिप्लेस रेजिमेंट, लेकिन अब दुनिया भर में ये रेजिमेंट अब फॉलो नहीं होता है. अब आप सिर्फ ब्लॉक करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डोज को कम करते जाते हैं. सो यू स्टार्ट विद मे बी 30 मिलीग्राम्स ऑफ कार्बिमेजोल और पेशेंट को हर 4-6 हफ्ते बाद बुला के उसका डोज कम करते जाते हैं. Is this patient a good candidate for primary anti-thyroid therapy? Yes, she is a good candidate. Radioactive iodine भी शुरू में दे सकते हैं और एंटीथायराइड ड्रग्स भी दे सकते हैं. Both are an option.
So Graves' disease is the most common cause of thyrotoxicosis. 50% Graves' disease hogi. Organ-specific autoimmune disease, most important autoantibody, TSI and TRAB antibodies. Of course, you'll get this presentation so you can learn this later. Anti-thyroid antibodies भी हो सकती हैं, anti-thyroglobulin antibodies भी आपको मिल सकती हैं. There can be organ-specific autoimmune disease as well, like pernicious, type 1 diabetes, RA, myasthenia, vitiligo, and adrenal insufficiency. Now, this is a nuclear scan, a technetium scan, or an iodine scan. This is a normal scan. ये जो black color नजर आ रहा है, ये butterfly के दो lobes हैं. In Graves' disease, there is increased uptake of the tracer in both the lobes. There is a diffuse uptake. So this is a normal thyroid gland, and this is a Graves' disease gland on technetium uptake. Again, case number 2. So again, be active on the chat box when I ask the question. So listen the question very carefully, right, guys? 40-year-old lady with 10-year history of non-toxic multinodular goiter presented to gynecology clinic with irregular menses, anxiety, palpitations, fatigue, and weight loss. Body mass index is 29, BP is 126/60, pulse 126, temperature 36.8, thyroid is grade 2 multinodular goiter, grade 2 multinodular goiter, no bruit at all, no proptosis, mild lid lag, fine tremors, moist and warm palms, FT4 is high, 2.19, TSH is low, 0.019, thyroid antibodies negative, technetium scan, 2 hot nodules with poor uptake in the rest of the nodules. Now, what is the diagnosis? Question number 1 is, what is the diagnosis? What do you think this is? This is a multinodular goiter. You see hyperthyroidism. You see thyrotoxicosis, which is symptoms of hyperthyroidism. Now, what is the diagnosis? What is going on? Is this Graves' disease? Okay, boys and girls. Students, I'm looking at the chat box for your answers. Okay, this is multinodular goiter. Goiter में nodules तो हैं, okay, लेकिन nodules ज़्यादा hormone बना रहे. This is hyperthyroidism. Thyroid hormone ज़्यादा बना रहे ये nodule. एक होता है कि nodules होते हैं लेकिन hyperthyroidism नहीं होता साथ में. एक है कि nodules भी हैं और वो thyroid hormone भी ज़्यादा बना रहे हैं. इसको हम कहते हैं टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर. टॉक्सिक का वर्ड यूज करते हैं, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर. एक मल्टीनोड्यूल्स होते हैं वो हार्मोन नहीं बनाते ज्यादा, उनको हम कहते हैं मल्टीनोड्यूलर गॉइटर, यूथायरॉइड. एक है कि ये मल्टीनोड्यूलर गॉइटर है लेकिन टॉक्सिक है, थायराइड हार्मोन बना रहा है. व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान? ग्रेव्स में हमने कहा था कि रेडियो एक्टिव आयोडीन भी दे सकते हैं, एंटी थायराइड ड्रग्स भी दे सकते हैं. टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर में क्या दे सकते हैं? What is the answer? Anybody? You want to give anti-thyroid medications or you want to give radioactive iodine in this patient? Thyroid hormone को कम करने के लिए. Carbimazole, okay, one option, okay. Iodine, okay. Look, the best option in multinodular toxic goiter or even a single nodule is radioactive iodine. आप दे सकते हैं कार्बिमेजोल अगर कोई रेडियोएक्टिव आयोडीन नहीं लेना चाहे या कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वो रेडियोएक्टिव आयोडीन है. क्योंकि अगर हम इसमें कार्बिमेजोल देते रहेंगे तो ये तो बीमारी सारी जिंदगी चलती रहेगी. तो इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है दैट इज रेडियोएक्टिव आयोडीन, राइट? सो दिस इज केस नंबर 2. लेट्स स्टडी अबाउट मल्टीनोड्यूलर गॉइटर मोर. Toxic multinodular goiter is the next most common hyperthyroidism. 20% यही होता है. देखिए जब आपको hyperthyroidism के केसेस मिलते हैं ना तो 50% ग्रेव्स होता है, 50% ग्रेव्स डिजीज था. 20% क्या होता है? टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर. एक होता है कि नोड्यूल्स हैं, टॉक्सिक नहीं है, ठीक है. एक है कि नोड्यूल्स हैं, दे आर टॉक्सिक, लाइक दिस, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर. टॉक्सिक का मतलब वो वाला टॉक्सिक नहीं है जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं. टॉक्सिक का मतलब है हाइपरथायरॉइडिज्म है. Now, this is more common in elderly individuals, lumpy, bumpy thyroid gland, milder manifestations, mild elevation of FT4, FT3, progresses slowly over time, clinically multiple firm nodules, scintigraphy, thyroid scan shows hot and normal areas. देखिए ये thyroid scan है, एक ये nodule है, एक ये nodule है,
एक नोड्यूल ये रहा, एक नोड्यूल ये रहा। सो ये बिल्कुल डिफ्यूज आपको नजर नहीं आ रहा, इसमें हॉट एरियाज नजर आ रहे हैं। दिस इज मल्टी नोड्यूलर टॉक्सिक गॉइटर, और ये उसका जो ट्यूमर उन्होंने जब निकाला तो ये नोड्यूल्स आपको नजर आ रहे, लंपी बम्पी ग्लैंड। Now let's come on to toxic single adenoma. Now toxic single adenoma is a single hyperfunctioning follicular thyroid adenoma. टॉक्सिक सिंगल एडेनोमा और टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर में एक ही फर्क है कि टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर में बहुत सारे नोड्यूल है, टॉक्सिक सिंगल एडेनोमा में एक नोड्यूल है। Benign monoclonal tumor that usually is larger than 2.5 centimeter. It is the cause in 5%. तो 50% Graves disease था, 20% toxic multinodular goiter था और 5% single adenoma. Nuclear scintigraphy scan shows only a single hot nodule. TSH is suppressed by thyroid hormone, so the rest of the thyroid gland is suppressed. देखिए, दिस इज द टेक्नीशियन स्कैन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से भी, ये स्कैन्स भी एग्जाम में आ सकते हैं आपके कि जी ये थायराइड ग्लैंड है, व्हाट इज दिस? नाउ दिस इज अ सिंगल हॉट नोड्यूल। अच्छा, जो हॉट नोड्यूल होता है ना, वो सारी प्रोडक्शन वहीं हो रही होती है, तो बाकी ग्लैंड जो होगा बिल्कुल वो कोल्ड हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, बाकी ग्लैंड हार्मोन नहीं बनाएगा। देखिए, अगर जैसे होता है ना गवर्नमेंट सेटअप में, अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो बाकी 8 काम ही नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट नहीं पॉलिटिकल सेंटेंस, राइट? So I mean, this is just a toxic single adenoma. इसमें और टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर में एक ही फर्क है कि ये सिंगल नोड्यूल है, वो मल्टीपल नोड्यूल्स हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस दोनों में एक ही है, रेडियो एक्टिव आयोडीन, राइट? रिमेंबर दिस। अगेन, दिस इज अ टॉक्सिक सिंगल एडेनोमा। ये नेक है, ये पेशेंट का फेस है, ये नेक है, ये ट्रंक आ रहा है, ये नेक के आगे नोड्यूल है। Case number 3, 28-year-old lady presented with 2-week history of fever. 28-year-old lady presented with 2-week history of fever, neck pain, palpitation, heat intolerance, fatigue. Pulse 120 per minute, temperature 101 degree Fahrenheit. Thyroid is diffuse grade 2 goiter, extremely tender on slightest touch. दबाने से दर्द हो रहा है. Moves with swallowing. Fever भी है 101. No eye signs, mild tremors of both hands. Lab data, FT4 is high, TSH is low, ESR is 100. ESR 100 है, फीवर भी हो रहा है, नेक को टच करें तो दर्द है, टेंडर नेक है. Which one of the following treatment options? Now देखिए, अब सवाल मैंने डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस का आपसे कर लिया, डायग्नोसिस का सवाल नहीं किया है, ठीक है? Which one is the treatment option? 1 propylthiouracil, 2 carbimazole, 3 radioactive ablation, 4 surgery, 5 prednisolone. Okay, what do you guys think? अब देखिए, इसमें नेक पेन भी हो रहा है, टेंडर नेक है, ESR बढ़ा हुआ है, फीवर हो रहा है और हाइपरथायरॉइडिज्म है. हम ग्रेव्स पढ़ चुके, मल्टीनोड्यूलर टॉक्सिक गॉइटर पढ़ चुके, टॉक्सिक सिंगल नोड्यूल वैसा ही होता है, मैंने आपको बता दिया. पहले चलें ये बता दें व्हाट इज द डायग्नोसिस. इसमें क्या डायग्नोसिस है? somebody writes okay, Sarush Abdi writes prednisolone, Manahil Tariq subacute thyroiditis, Sana subacute thyroiditis. Fantastic, this is subacute thyroiditis. Subacute thyroiditis में पहले hyperthyroidism होगा, फिर hypothyroidism का फेज आएगा. So this is subacute thyroiditis. Very good. This is subacute thyroiditis, viral infection of the thyroid gland. इसके 3-4 हॉलमार्क्स है, टेंडर नेक, फीवर, रेज्ड ESR, ये इसके हॉलमार्क्स हैं. और इसकी ट्रीटमेंट फैंटास्टिक, जिसने भी लिखा, इसकी ट्रीटमेंट है प्रेडनिसोलोन. प्रेडनिसोलोन इज द ट्रीटमेंट. इसमें हम प्रेडनिसोलोन देते हैं और NSAIDs देते हैं, राइट? लेट्स मूव फर्दर. सब एक्यूट थायराइडाइटिस 15% केसेस. तो देखें, 50% ग्रेव्स डिजीज, 20% मल्टीनोड्यूलर टॉक्सिक गॉइटर, 5% सब सिंगल नोड्यूल, फिर अगेन 15% subacute thyroiditis. T4, T3 are extremely elevated. Immune destruction हो जाती है because of viral infection. Destructive release of preformed thyroid hormone. Thyroid gland is painful and tender on palpation. Patient को आप हाथ भी लगाएंगे वो दर्द करेगा, right? Nuclear scintigraphy बहुत important है. Nuclear scintigraphy, no radioactive iodine uptake. Uptake होगी ही नहीं because viral infection की वजह से destruction हो रही है thyroid gland की और हार्मोन रिलीज हो रहा है. सो देयर इज नो प्रोडक्शन, कोई अपटेक नहीं होगी. ट्रीटमेंट इज NSAIDs एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स.
देखिए दिस इज अ नॉर्मल थायराइड ग्लैंड। अब अगर आप देखें सब एक्यूट थायराइडाइटिस, तो ये नेक है, ये ऊपर सलाइवरी ग्लैंड्स है, राइट, ये नेक है और नेक में आपको ग्लैंड नजर ही नहीं आ रहा, दिस इज सब एक्यूट थायराइडाइटिस। Again, case history number 4, 24-year-old gravida 1 with 10 weeks gestation. अब pregnancy है, right? This is pregnancy. 24-year-old gravida 1, 10 weeks pregnancy with severe nausea, vomiting of 2 weeks duration, recently lost 5 kg in weight. BP 165, pulse 120, excessive sweating and tremors, small diffuse goiter, no bruit, no ophthalmopathy. Lab data, TSH is low, T4 is high, thyroid antibody is negative. What is your diagnosis? Okay, guys. So again, move on to the chat box. What is the diagnosis? This is a 10-week-old lady, hyperthyroidism, T4 is high, TSH is low, antibodies भी नॉर्मल आई हैं, डिफ्यूज स्मॉल डिफ्यूज ग्लैंड भी मौजूद है, पल्स भी 120 है. What you think is the diagnosis? Number 1, Graves' disease. Number 2, subacute painless thyroiditis. Number 3, gestational HCG induced thyrotoxicosis. Number 4, postpartum thyroiditis. Postpartum तो जाहिर है पार्टम के बाद होगा. Toxic nodular goiter. Okay, so Sarosh Abdi says gestational HCG induced thyrotoxicosis. Okay, great. So this is the answer. Yes, gestational HCG induced thyrotoxicosis. Very good. Again, answers coming privately as well. Nimran Nader, your answer is also correct. So moving on further in this case. Okay, so which one of the following treatment option is appropriate? अब ये तो gestation है, pregnancy है, इसके पहले 3 महीने में thyrotoxicosis है, nausea, vomiting भी हो रही है. What is the answer? What is the diagnosis? Number 1, hydration and propranolol. Number 2, propyl thiouracil. Number 3, carbimazole. Number 4, radioactive iodine ablation. मैं खुद बता दूं radioactive iodine कभी भी pregnancy lactation में नहीं देना है. Number 4, surgery. What is the answer? What do you guys say? वेरी गुड. सम पीपल राइट प्रोपाइल थायोयूरासिल, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ये देना है. वेरी गुड. द ओनली थिंग इज प्राइवेटली आई एम रिसीविंग आंसर्स. ठीक है, अगर पब्लिकली भी डाल दें तो कोई मसला नहीं है भाई. ठीक है, सो ओके, प्रोपाइल थायोयूरासिल पहले ट्रिमेस्टर में देना है, लेकिन ग्रेव्स डिजीज में देना है. नाउ दिस इज नॉट ग्रेव्स डिजीज, this is gestational thyrotoxicosis. Or gestational thyrotoxicosis when you wait and try and avoid medication, and hydration and propranolol is the answer. Answer है hydration and propranolol. Very good, few people are answering this. So this is the answer. देखिए ग्रेव्स डिजीज अगर किसी को हो और फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हो तो आंसर प्रोप्रेनोलॉल है, लेकिन अगर गेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस का जवाब देने तो हाइड्रेशन अच्छी करें, ओनली बीटा ब्लॉकर्स दें. That's it. Case number 5, 25-year-old woman evaluated because of 3-week history of palpitation and increased sweating. She gave birth to a healthy baby 3 months ago. 3 months पहले delivery हुई है. She has taken a 6 months maternity leave. The patient intends to continue nursing her baby until she returns to work. She has no history of thyroid disease. Pulse 94, BP 90/70, thyroid gland slightly enlarged है, not nodular, FT4 बढ़ा हुआ है, TSH normal है. Okay, so again, okay, so for the previous case, पिछले केस में किसी ने पूछा है कि will that worsen the symptoms? No, it will not actually. That will control the heart rate. और gestational thyrotoxicosis में 2 symptoms होते हैं जो worrisome symptoms होते हैं. पिछले वाले केस की बात कर रहे हैं, gestational thyrotoxicosis की. एक सिम्टम होता है वॉमिटिंग्स का, जिसको गायनेकोलॉजिस्ट दवाइयां देके कंट्रोल करती हैं और जो हाइड्रेशन से बेहतर हो जाता है. हाइड्रेशन से वॉमिटिंग बेहतर होने लगती है. और दूसरा सिम्टम होता है टेकिकार्डिया, जिसको बीटा ब्लॉकर्स बेहतर करते हैं. तो सबसे बड़े ये 2 सिम्टम्स होते हैं, टेकिकार्डिया, पैल्पिटेशन. से पेशेंट पैल्पिटेशन के साथ आएंगी, हमें टेकिकार्डिया मिलेगा साइन. और दूसरा सिम्टम होता है वॉमिटिंग. तो हाइड्रेशन और प्रोप्रेनोलॉल से दोनों सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं. ठीक है, सो इट विल नॉट गेट वर्स, इन फैक्ट इट विल गेट बेटर. अब हम इस केस पे आ जाते हैं. ये दिस लेडी हैज जस्ट डिलीवर्ड 3 months ago, राइट. 3 महीने पहले डिलीवरी हुई है और अब ये थायरोटॉक्सिक सिम्टम्स के साथ आई हैं. व्हाट इज द डायग्नोसिस? पहले डायग्नोसिस बता दें, राइट. सो व्हाट इज द डायग्नोसिस? ओके,
Postpartum thyroiditis, somebody writes to me privately and somebody on the floor. Postpartum thyrotoxicosis, excellent. Postpartum thyroiditis, yes. Postpartum thyroiditis comes in the first 6 months after delivery. So, क्या देंगे ट्रीटमेंट? देखिए थायरोइडाइटिस जब भी होता है ना, तो ये इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन. ओके, सो अगेन व्हाट इज द ट्रीटमेंट? Propranolol, prednisolone. Well, you don't find, okay, so subacute thyroiditis में prednisolone देते हैं, लेकिन postpartum thyroiditis में कोशिश करते हैं कि बीटा ब्लॉकर से इसको कंट्रोल किया जाए, जैसे प्रेगनेंसी में करते हैं ना बीटा ब्लॉकर से कंट्रोल, तो postpartum thyroiditis में भी बीटा ब्लॉकर से कंट्रोल करते हैं. And prednisolone is not used usually or routinely in this patient, right? So I am trying to give a brief glimpse of different hyperthyroid cases. ठीक है कि ये hyperthyroidism जब हम students से पूछते हैं कि क्या है clinic में, तो कहते हैं sir this is hyperthyroidism. So we always ask them what hyperthyroidism? Is this Graves? Is this multinodular goiter? Is this toxic multinodular goiter? Is this toxic single nodule? Is this subacute thyroiditis? Is this postpartum thyroiditis? Is this gestational induced thyrotoxicosis? So I am trying to give you a glimpse of all these cases so that you understand. Okay, so this is another case, case number 6. 31-year-old man referred to Karachi Psychiatric Hospital. ये थोड़ा सा मुश्किल केस है, लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए लाया इसलिए ताकि आप लोगों को ये आना चाहिए. So Karachi Psychiatric Hospital से रेफर हुआ है for fluctuating testosterone levels, sexual weakness and feeling of fear. He has normal sense of smell, no weight loss or gain recently. Blood pressure 125/80, pulse 100 है, weight 62. Head and neck, lack of facial hair, क्योंकि testosterone भी low रहता है, तो lack of facial hair. Thyroid not palpable, no gynecomastia. Axillary hair again stage 2-3, stage 5 तक होना चाहिए, stage 2-3 है. Genital exam, phallus normal adult, pubic hair stage 4, scrotum small for age. Testis, small testis, right 6 milliliter, left 8 milliliter. Prolactin normal है. LH और FSH कम है. कम इसलिए क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज 21, तो टेस्टोस्टेरोन अगर कम हो जाए तो LH FSH को बढ़ना चाहिए. अगर LH FSH नहीं बढ़ रहा, तो LH FSH कहां से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है. तो अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन कम हो तो LH FSH को बढ़ना चाहिए. अगर LH FSH नहीं बढ़े तो इसका मतलब प्रॉब्लम किधर है? मैं बता नहीं रहा अभी प्रॉब्लम किधर है, बाद में बताऊंगा. FBS 89, FT4 बढ़ा हुआ है 2.8, TSH भी बढ़ा हुआ है 6.4. FT4 is high, TSH is high, ACTH not detected, cortisol less than 0.4 है. cortisol भी कम है. अच्छा, जब cortisol को कम हो तो ACTH पिट्यूटरी से आता है. cortisol कम बन रहा है एड्रिनल से, तो ACTH को क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. तो ACTH भी नहीं बढ़ रहा, LH FSH भी नहीं बढ़ रहा, FT4 is also high, TSH is also high. What is this? Somebody writes pituitary issue. Okay, Dr. Eliasgar, hyperthyroidism में pituitary पर आ रहे हैं. Which one of the following is the most appropriate diagnosis? You all write pituitary issue. Which one of the following is a problem? Graves' disease, TSH producing pituitary adenoma, Kalman syndrome, Klinefelter syndrome, Addison's disease. What is the problem? Number 3. Okay, somebody writes, yes, this is TSH producing pituitary adenoma. There is more TSH and more FT4. देखें usually क्या होता है, FT4 बढ़ता है, TSH suppress हो जाता है. लेकिन pituitary tumor में क्या होगा? More TSH, more FT4. अच्छा, clinically ये case बहुत rare है. Very good, you all have answered. Thank you very much. You're all awake and kicking, right? I'm good to see that. So generally क्या होता है कि TSH कम होना चाहिए था, FT4 बढ़े, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. अच्छा, बड़ा rare case है, लेकिन academic purpose के लिए आपको आना चाहिए. So we have got limited time left. We have got another question. Oh, so quickly we'll do that. The 42-year-old woman is seen in ER with sinus tachycardia, massively obese hai, lost 14 kg weight hai. She has stare, no proptosis, thyroid not palpable, tremors are present, decreased muscle strength. TSH is less, FT4 is high, 24-hour radioactive iodine uptake is 0.3. यानी uptake नहीं है. देखें hyperthyroidism है, uptake नहीं हो रही. थायरोग्लोबुलिन सही है, सॉरी थायरोग्लोबुलिन लो है. थायरोग्लोबुलिन क्या होता है? ये जब बॉडी में थायराइड हार्मोन बनता है तो थायरोग्लोबुलिन भी साथ बनता है. तो थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है लेकिन थायरोग्लोबुलिन कम है. ओह स्ट्रेंज, थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है लेकिन थायरोग्लोबुलिन कम है.
और अपटेक नहीं है, लेकिन पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म है, व्हाट इज द डायग्नोसिस? ओके, एनीबॉडी? Number 1, subacute thyroiditis. Number 2, struma over eye. Number 3, silent lymphocytic thyroiditis. Number 4, thyrotoxicosis factitia, exogenous thyrotoxicosis. Number 5, recent iodide exposure. What do you guys say? Okay, somebody writes recent thyroid exposure, recent iodine exposure. देखें इसमें क्या हो रहा था, बॉडी में थायराइड हार्मोन बन नहीं रहा क्योंकि थायरोग्लोबुलिन कम है, ठीक है, लेकिन थायराइड हार्मोन टेस्ट कराओ तो ज्यादा आता है, लेकिन थायरोग्लोबुलिन कम है क्योंकि थायरोग्लोबुलिन को तो 7 बनना चाहिए थायरोक्सिन के, लेकिन नहीं बन रहा 7। किसी एक का आई थिंक माइक खुला हुआ है, वो प्लीज बंद कर दें फ्रॉम द एडमिन साइड प्लीज। सो थायराइड हार्मोन ज्यादा है लेकिन थायरोग्लोबुलिन कम है, तो इसका मतलब, और आयोडीन अपटेक अंदर भी नहीं आ रही, इसका मतलब अंदर भी नहीं बन रहा, इसका मतलब है एक्सोजेनस थायराइड। अच्छा, ये होता है एक्सोजेनस थायराइड, लोग वेट कम करने के लिए यूज करते हैं। तो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, फैक्टिशिया एक्सोजेनस थायरोटॉक्सिकोसिस। नाउ वी हैव डन द 7 केसेस। कुछ मैं चीजें आपको बताऊंगा और उसके बाद वी विल फिनिश द लेक्चर इन मे बी नेक्स्ट 5 मिनट्स। ग्रेव्स डिजीज की एज ग्रुप देख लीजिए, 20 to 40 इयर्स में होता है ग्रेव्स डिजीज। टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर मोर देन 50 इयर्स में यूजुअली, राइट, यूजुअली। टॉक्सिक सिंगल एडेनोमा होता है 35 to 50 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में। सब एक्यूट थायराइडाइटिस एनी एज। मेल टू फीमेल रेशियो ग्रेव्स डिजीज में 5 times to 10 times more common in females. Toxic multinodular goiter 2 to 4 times more common in females. So thyroid diseases mostly females में ज्यादा होती हैं। एज ग्रुप मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी, you can read more. This is a normal thyroid gland. B, this is a Graves disease, diffuse uptake of the thyroid gland as you can see. अच्छा, ये किसी ने ट्रीटमेंट भी पूछी है केस 6 और केस 7 की। केस 7 फैक्टिशियस था तो उसको रुकवा देंगे, डोंट टेक थायराइड हार्मोन प्लीज, ठीक है। केस 6 इज अ डिफिकल्ट केस क्योंकि केस 6 में ये हो रहा है कि दिस इज अ TSH एडेनोमा and you need a surgery of this adenoma in the pituitary gland. You either need a surgery or a gamma knife or a cyber knife to kill this adenoma, right? तो जो TSH एडेनोमा था उसके लिए सर्जरी या गामा नाइफ, साइबर नाइफ, और ट्यूमर रिसेक्शन, यस, which is a transphenoidal resection, right? और केस नंबर 7 के लिए तो बहुत आसान है, वो बाहर से थायराइड ले रहा है तो उनको कह दिया जी प्लीज डोंट टेक थायराइड ग्लैंड, राइट? Sorry, I just saw the questions, okay? So again, come to these technician scans. This is a normal scan. This is Graves disease, diffuse uptake. ये आप देख रहे हैं multiple nodules हैं C में, toxic multinodular goiter. What is the treatment of choice for toxic multinodular goiter? Can anybody write please quickly on the chat box? Treatment option, best treatment for toxic multinodular goiter. And D is toxic adenoma. Okay, radioactive iodine, fantastic. Radioactive iodine, great. And again, D is a toxic single adenoma, right? Fantastic. So you all know it now, right? It's fantastic and brilliant when you go in and see these images in practice. क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? देखिए, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं दोस्त दैट अकर, अभी हम सारे क्लिनिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, सारे हाइपरथायराइडिज्म की। टाइम शॉर्ट है, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू स्टार्ट लेट, मीटिंग लेट स्टार्ट किया तो थोड़ा होस्ट ने। सो दोस्त दैट अकर विद एनी टाइम ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। एक तो होते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस के फीचर्स, हार्ट रेट बढ़ गई, ट्रेमर हो रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, ये। नंबर 2, दोस्त दैट आर स्पेसिफिक टू ग्रेव्स डिजीज। एंड नंबर 3, नॉन स्पेसिफिक चेंजेस ऑफ हाइपरमेटाबॉलिज्म। तो जब कोई आपसे हाइपरथायराइडिज्म के फीचर पूछे तो इन 3 हेडिंग्स में आप जवाब देंगे। कॉमन सिम्टम्स आर नर्वसनेस, एंजाइटी, इंक्रीज perspiration, heat intolerance, tremor, hyperactivity, palpitation, weight loss, menstrual flow reduction। ये तो कॉमन सिम्टम्स है थायरोटॉक्सिकोसिस के। ग्रेव्स के सिम्टम्स क्या हैं? डिफ्यूज पेनलेस एंड फर्म एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ब्रूई। ब्रूई आपको ऑलमोस्ट ऑलवेज सुनाई देगी इन थायराइड, इन ग्रेव्स डिजीज, राइट? So, somebody is again written a question. Thyroid toxic multinodular goiter, can that actually transform into a tumor? Well, जितनी भी टॉक्सिक होते हैं ना नोड्यूल्स, जितने टॉक्सिक नोड्यूल्स होते हैं उनमें ट्यूमर का चांस बहुत कम होता है, लेस देन 1% होता है। ट्यूमर का चांस होता है नॉर्मल थायराइड में और कोल्ड नोड्यूल में। जो हॉट एरियाज होते हैं उनमें कैंसर का चांस बहुत कम होता है। तो ये याद रखिएगा कि जितने भी हॉट ग्लैंड्स है ना,
ग्रेव्स हो, हॉट नोड्यूल्स हो, हॉट सिंगल नोड्यूल हो, हॉट मल्टीपल नोड्यूल्स हो, उसमें कैंसर का चांस बहुत कम होता है. So now we are studying Graves ophthalmopathy. This is proptosis, lid retraction. आप देख रहे हैं ऊपर आपको lid नजर आ रही है, स्क्लेरा नजर आ रहा है. आमतौर पे स्क्लेरा ऊपर नजर नहीं आएगा, लेकिन इसमें देखिए स्क्लेरा ऊपर नजर आ रहा है. This is lid retraction, right? Lid retraction. This is periorbital edema and chemosis. मैं सिर्फ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन जाहिर है आपको मिल जाएगी एडमोडो पे. You can have a detailed look later on. Again, this is severe exophthalmosis, right? ये thyroid dermopathy है. Read more about thyroid dermopathy on the shins. Very interesting, right? Thyroid acropathy, जिसमें clubbing और osteoarthropathy होती है. These pictures are clue towards hyperthyroidism. Onycholysis, right? Onycholysis, where you have got nails that just lose their mark, right? So again, diagnosis, typical clinical presentation होगी. Markedly suppressed TSH होगा, TSH बहुत कम होगा, FT4, FT3 high होगा. Thyroid antibodies जो हैं, they will be present in certain cases that you will see. And again, ECG to demonstrate cardiac manifestations. You can have ECG, and nuclear scintigraphy is very important. Treatment options क्या होते हैं? Symptom relief, symptoms को बेहतर करना है. एंटी थायराइड मेडिकेशन मेथीमेजोल यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, यूएस में यूज होता है. कार्बेमेजोल कैन बी यूज्ड. एंड देन propylthiouracil in the first 3 months of pregnancy in Graves' disease. Radioactive iodine treatment, thyroidectomy, NSAIDs and corticosteroids. NSAIDs, corticosteroids for subacute thyroiditis, right? Symptom relief में rehydration is very important. फिर beta blockers है. If you cannot give beta blocker, you can give calcium channel blockers as well. अगर heart की rhythm abnormal हो जाती है, arrhythmias हो जाते हैं, तो उसको treat करना है. How long to give anti-thyroid drugs? So reduction of thyroid hormone takes 2 to 8 weeks. So when we start someone on treatment, we check TSH and FT4 every 4 to 6 weeks, right? In Graves, many go into remission after 12 to 18 months. I told you 50% will go in remission in 18 months' time. In such patients, anti-thyroid drugs may be discontinued. 40% experience recurrence in 1 year. दोबारा तकरीबन आधों को recurrence हो जाता है. अगर recurrence होगा तो best treatment again will be radioactive iodine. Multinodular goiter, toxic adenoma में radioactive iodine is the treatment of choice. Surgery भी कर सकते हैं in patients who are resistant, who cannot take radioactive iodine. Radioactive iodine के बारे में कुछ चीजें बता दूं and where you cannot give it, right? So in women who are pregnant, you cannot give it. So you can use in women who are not pregnant. वहाँ पे आप use करें. You can use in toxic multinodular goiter, Graves, toxic single adenoma, Graves disease not remitting with medication. जो medication से Graves disease ठीक नहीं हो तो आप radioactive iodine दे दें. The effect is less rapid than thyroid drugs or thyroidectomy. Effect इसका शुरू ही 2 महीने बाद होगा. तो जब हम radioactive iodine देते हैं तो 2 महीने से लेके 6 महीने बाद तक effect आता है. It is effective, safe and does not require hospitalization. Single dose होता है, इसको कैप्सूल या लिक्विड फॉर्म में दे देते हैं. इसकी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, बच्चों से दूर रहना होता है चंद दिन, प्रेगनेंसी अवॉइड करनी होती है फॉर द नेक्स्ट 6 months. Very few adverse effects, right? सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करते हैं थायराइड हाइपरथायराइडिज्म में? इन सिवियर हाइपरथायराइडिज्म इन चिल्ड्रन यू कैन डू सर्जरी. Pregnant women who cannot tolerate ATD and who cannot tolerate the thyroid symptoms, उनमें सर्जरी करते हैं. सर्जरी के लिए जो बेस्ट ट्रिमेस्टर होता है वो सेकंड ट्रिमेस्टर होता है. कभी भी कोई सवाल हो ना कि किस ट्रिमेस्टर में सर्जरी करेंगे, तो आपने कह देना है सेकंड ट्रिमेस्टर, बिकॉज दैट्स द वे टू गो. सेकंड ट्रिमेस्टर इज द सेफेस्ट फॉर मोस्ट सर्जरीज. लार्ज गॉइटर जहां सिवियर ऑप्थेल्मोपैथी हो वहां भी सर्जरी कर सकते हैं. लार्ज मल्टीनोडुलर गॉइटर जहां प्रेशर सिम्टम्स हो, ट्रेकिया पे सिम्टम्स आ रहे हैं, वहां सर्जरी कर सकते हैं. दोज हु रिक्वायर क्विक नॉर्मलाइजेशन ऑफ थायराइड फंक्शन, वहां पे आप सर्जरी कर सकते हैं. Okay guys, thank you very much. If you have any questions, please post it on the chat box. And even then, if you have any questions, you are very welcome to come to me anytime and ask. We are always there for you. And you can also post your questions in my email, which is dr.ali
Asgar at lnh.edu.pk. So has anybody got any questions? Because I have got 3 questions for you, right? So again, is hypochromic microcytic anisocytosis associated with thyroid disorder? Now you see, I mean, in thyroid disorders, what you need to understand is in hypothyroidism and hyperthyroidism, you can get anemia. You can get anemia and hypothyroidism. And yes, this hemoglobin is associated with thyroid function mainly because thyroid is dealing with all sorts of metabolism, right? So obviously thyroid function will have an impact on the hemoglobin production. So you can have hemoglobin abnormalities with thyroid function, yes. Okay, I have got 3 questions to ask. Which is the most common 3 or 4 questions that मैं भी पूछूंगा, आप लोग अपने questions पूछते रहे, मैं अपने questions पूछता हूँ, मेरी आदत है. So which is the most common hyperthyroidism? Okay, so a clap for the person who answers first. Okay, which is the most common hyperthyroidism? Graves' disease. Garira Batul, just give her a good clap, right? Graves' disease, 50% of hyperthyroidism is Graves' disease. Very good, Rabi Tariq, Alishba Ali Khan, Manail Tariq, very good, fantastic. And Nimran Nadir. Okay, next question is, what is, in what duration 50% of patient in Graves' disease will go into remission if you treat them with medication? In what duration? 18 months. Fantastic. MC2023, your name is not written, so I don't know. Good clap for 2023 049 and 078. इनके लिए तालियां जी. I don't know what's your name. Can you write what's your name, please? Huh? Okay, so question number 3 is, question number 3 is, question number 3. Okay, so what is the treatment of choice in single toxic nodule? Single toxic nodule mein what is the treatment of choice? There will be claps for the person who answers first. What is the treatment of choice for single toxic nodule? Okay, anybody? Can you guys hear me? Yes. Radioactive iodine, very good. Give a good clap to Rabi Tariq. Okay, fantastic. So very good. That's the answer. Good, Manail Tariq. Okay, so if T3, TSH are borderline normal and so is hemoglobin, yet mixed hypo symptoms present. Okay. Look, symptoms are just a clue towards going and looking for signs, and signs are clue for going and looking at the labs, right? So many people will have tiredness and weight gain, but their TSH will be normal. I have checked my TSH 3 times in my life and it has come out to be normal yet, right? So it's not about the symptoms. You need to see the lab results, whether they are convincing to label that person as hyperthyroidism or hypothyroidism. If they are borderline normal, then they are normal actually. I mean, normal की range के अंदर ही है तो normal ही कहेंगे उसको, ठीक है? Then even if symptoms are present, start looking for something else. So this is my last question that I am asking. Okay, this is the last question I am asking. What is the safest trimester in pregnancy for any surgery? Very easy question, right? Second, fantastic Hibahani, fantastic 20 other. Okay, fantastic. You all know it. Great, guys. This presentation, as usual, will be uploaded on Edmodo and you'll be getting your assignment by tonight. Thank you very much for being here. If you have any other questions, you are very warm. You're welcome to post to my email. Yusra has my email. You can have that, right? Great. Any other questions before we go off? So hopefully, I think the classes may be beginning soon. We miss seeing you all and interacting with you all on in person in the class. I mean, sometimes I feel like crying when I'm doing these